नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज 1 फरवरी 2023 बुधवार है। हर रोज़ की तरह हम आज भी निफ्टी में कल और अगले कुछ दिनों के रुख की बात करेंगे। आज यूनियन बजट भी पेश किया गया संसद में और उसका असर बाज़ार पर कुछ पड़ना था, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बाज़ार का रुख क्या था। सोमवार को 17,400 का लो बनाकर हम लोगों ने आपस में बात की थी। तब मेरी राय ये थी कि हम एक तेज़ी की तरफ जा रहे हैं। 2 रेजिस्टेंस लेवल्स थे। मुझे याद नहीं है मैंने यूट्यूब पर कहा था कि नहीं आपके साथ, लेकिन आपके साथ या फिर CNBC पर ये लेवल्स की बात होनी चाहिए थी। 17,800 और 18,030 ये दोनों सपोर्ट लेवल्स थे जो कि टूट के नीचे गया था बाज़ार। जब सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। इसलिए इस रेजिस्टेंस को मैं जब आपको बता रहा हूँ तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं आपको कोई बहुत ज़बरदस्त खोज नहीं करके दे रहा हूँ। ये वो लेवल्स हैं जो सपोर्ट के थे, जिनकी बारे में कई बार हमने बात की थी यहाँ पर। वो सपोर्ट टूट गया और अब वो रेजिस्टेंस बन गए। 17,800 के रेजिस्टेंस को बाज़ार तोड़ते हुए बहुत आसानी से ऊपर चला गया। 17,975 तक गया, जहाँ से वो नीचे आने लगा। अब 18,030 का रेजिस्टेंस था। देखिए, आप भी समझते हैं कि एक जोन होता है, कोई एक पॉइंट नहीं होता है। तो 17,975 का जो लेवल बना, मैं समझ रहा हूँ कि 18,030 के रेजिस्टेंस के आसपास वो जाकर रुक गया, जहाँ उसको रुकना चाहिए था। हो सकता, संभावना थी कि वो रुक जाए, और वो रुक गया। जो तेज़ी का माहौल हमने सोमवार को देखा था वो आज पूरा हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि तेज़ी नहीं है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि मंदी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई राय नहीं है। अब बाज़ार 1-2 दिनों में कोई पैटर्न बनाएगा, कोई लेवल्स आइडेंटिफाई करेगा, कुछ तो करेगा, तब कोई दूसरी राय बनेगी। मोटा मोटी राय ये है कि हम कोई तरह की तेज़ी में ही हैं, लेकिन जितनी वॉलेटिलिटी आज हमने देखी है उसके बाद ये तय नहीं है। और मुझे लगता नहीं है कि मैं कोई बहुत अच्छा ट्रेड करूँगा कल। कोई कभी कभी ट्रेड ना करे, वो अपने आप में बहुत अच्छा ट्रेड होता है। तो जब राय बनेगी, स्वाभाविक है, रोज़ आपसे बात होती रहती है, शेयर करूँगा मैं। कमेंट्स देते रहिएगा और जय हिंद। Good evening, I am Sudarshan Sukhani and today is Wednesday, 1st February 2023. The Union Budget was presented to Parliament today, and as we all know, the Union Budget usually creates some volatility in the stock market, and that happened today also. But before we discuss the view and the outlook for the next few days, I want to go back to Monday when we had identified 17,400 as a support level. The support level held and a buying opportunity arose. That buying opportunity continued. Now I have identified 2 resistance levels. I don't remember if I have done it on YouTube or on TV18, or maybe I just put it on my charts. So I'm not sure if I discussed it, but the 2 levels were 17,800 and 18,030. These 2 levels are not rocket science. They have not come out of some significant research on my part. It's not like that. They are simply the support levels which were broken earlier. Remember, 18,030 was the support talked about on this channel that was broken, and then 17,800 was that large support which was broken. Support once broken becomes resistance if the market start going up. Now 18,000 to 17,800 resistance was broken easily by the market Nifty today, but the next level 18,030 apparently held. The Nifty went all the way to 17,975 approximately, and then started retreating from there. And what a retreat. But that we won't talk about the retreat. We will understand that the resistance of 18,030 held, and that told us that at least this leg of the up move is over. Now I don't have a view as such on what is going to happen tomorrow or day after. We may go up, we may go down, we may become choppy, no idea at all. And this means that I am not likely to take a trade, and sometimes not taking a trade is a trade by itself. Better not to trade than to pay a lot of money to the market through choppy trading. Broadly, I do think that we have made the lows, although today again a low was broken. But with all of that volatility, perhaps we may be looking at higher levels. Perhaps. Don't go by it, because I'm not very sure. But if we have to decide between a bearish and a bullish outlook, I would go for a bullish outlook.
in the near term. And actually we are looking at a day by day and day to day movement of the market now. Tomorrow I don't have a view. I don't think I'm taking a trade. And we discuss this market every day with each other. Let's see what happens tomorrow. And I have to thank you again for your comments. Please keep on writing your comments. Thank you and Jai Hind.